इमेजिन करो तुम अपने घर में आराम से बैठे हो और तुम्हारा स्टैंडर्ड वाईफाई राउटर साइलेंटली तुम्हें ट्रैक कर रहा है थ्रू द वॉल्स। या फिर एक सिंपल कैस्टर बीन के वेस्ट से दुनिया का सबसे डेडली पॉइजन बन जाए। माइंड ब्लोइंग, राइट? आज हम ऐसे ही माइंड बेंडिंग सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल सीक्रेट्स अनकवर करेंगे। एग्जैक्टली दोस्त, आज का डीप डाइव बेसिकली एक मैसिव जर्नी है। हम कवर करेंगे 7 मेजर डोमेन्स लाइक बॉर्डर मैनेजमेंट, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, FATF एंड फाइनेंशियल क्राइम्स, ड्रग स्मगलिंग और डिफेंस पॉलिसीज। हर एक सब टॉपिक को थॉरली ब्रेक डाउन करेंगे। सो दैट्स कूल ना? यूपीएससी पर्सपेक्टिव से एकदम सॉलिड मेमोरी हैक्स भी मिलेंगे। लेट अस अनपैक दिस। लेट्स डू इट। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट ब्लॉक, टॉपिक नेम डेमोग्राफी मिशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, सिक्योरिंग इंडियाज फ्रंटियर्स। राइट, सो एक हाई पावर्ड मिशन टू टैकल द चैलेंज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। इमेजिन एक बॉर्डर टाउन जहां सडन पॉपुलेशन सर्च से रिसोर्सेज कंप्लीटली खत्म हो जाएं। दिस मिशन इज टू मैनेज दैट एग्जैक्ट केओस। इंट्रो की बात करें तो पीएम ने रिसेंटली अनाउंस किया अ हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। बैकग्राउंड ये है कि 2016 में गवर्नमेंट ने एस्टिमेट दिया था अराउंड 20 मिलियन इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स इंडिया में है, दो आज कोई ऑफिशियली वेरीफाइड एस्टिमेट नहीं है। कोर लॉजिक पे आते हैं। द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 अथॉरिटीज को एम्पावर करता है टू डिटेक्ट, डिटेन एंड डिपोर्ट। असम में NRC अपडेट हुआ अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन। फॉर फिजिकल बॉर्डर मैनेजमेंट CIBMS यूज होता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रेडार्स, सेंसर्स और ड्रोन्स हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज क्रिटिकल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। यूपीएससी फोकस बेसिकली CIBM's टेक और 2025 एक्ट पे है। कंक्लूजन यही है कि टेक्नोलॉजी और स्ट्रॉन्ग लॉज का कॉम्बिनेशन इज द फ्यूचर ऑफ बॉर्डर सेफ्टी। लेट्स डू अ क्विक मेमोरी ड्रिल। ओके, ये 2025 वाला एक्ट एग्जैक्टली क्या करता है? डिटेन, डिटेक्ट और डिपोर्ट करता है इलीगल इमिग्रेंट्स को। गॉट इट। और असम में NRC किसकी निगरानी में हुआ? सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में। मेक सेंस। 2016 का इलीगल माइग्रेंट एस्टिमेट कितना था? अराउंड 20 मिलियन। एंड CIBMS में क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है? रेडार्स, सेंसर्स और ड्रोन्स फॉर सर्वेलेंस। लास्ट वन, CIBMS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। Awesome. Now, pause and practice saying CIBMS uses radars, sensors, drones. In short, demography mission combines the 2025 Act with CIBMS tech to secure our demographic borders. याद रखना। Next up, topic name, Northeast, broad micro theme, securing India's frontiers. Northeast इंडिया के जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज और recent developments. सोचो एक हाईवे ब्लॉक होने से पूरी वैली की लाइफ रुक जाए। That is exactly what happened with NH2. Intro is that the Rising Northeast Summit was held, organized by Ministry of Donar to unlock trade potential. Background में PM ने inaugurate किया with the East Vision, meaning empower, act, strengthen, transform. Focus is on the geostrategic location connecting ASEAN and BBBN nations. Infrastructure focus is on India, Myanmar, Thailand trilateral highway और कालादान multimodal transit project. Core logic में देखें तो मणिपुर में PM visit set है. It's the first since the 2023 ethnic violence between Kuki-Zo and Meitei communities. Imphal Valley is a Meitei stronghold, or Churachandpur is Kuki-Zo majority, right? And NH2 connects Imphal Valley to Dimapur, which is essential for landlocked Imphal, but was blocked since 2023. Buffer zones between valley and hills are operational under President's rule. Also, the women's market, Ima Khethiel, in Imphal, is a 16th century market run by 5,000 to 6,000 women. Men are not allowed to run stalls. Fascinating history. Also, the India-Myanmar border was demarcated by the British in 1826 without local consultation. इसकी वजह से लोंगवा विलेज इन मॉन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में बॉर्डर चीफ के घर को लिटरली डिवाइड करता है। Real world impact is key for mapping questions. UPSC focus on NH2 route, Ima Kethil history and Kaladan project. Conclusion is that Northeast का development is key to the Act East policy. Time for the drill. PM का Northeast Vision का acronym क्या है? East, empower, act, strengthen, transform. NH2 किन दो मेन सिटीज को कनेक्ट करता है? इम्फाल वैली को डिमापुर, नागालैंड से। इम्फाल मार्केट की क्या खासियत है? 16th century market, completely run by over 5,000 women. Men allowed नहीं है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर किसने और कब डिमार्केट किया? ब्रिटिश ने 1826 में बिना लोकल कंसल्टेशन के। किस विलेज में बॉर्डर चीफ के घर के बीच से निकलता है? लोंगवा विलेज, मॉन डिस्ट्रिक्ट में। Now, pause and practicing. NH2 connects Imphal to Damapur. In short, Northeast geostrategic importance lies in the East Vision, key highways, and resolving deep ethnic divides. Moving on. Topic name, Assam indigenous communities. broad micro theme. Securing India's frontiers. Explanation है, Assam government giving arms licenses to specific native groups for protection. Imagine living near a porous border with constant threats. एक legal weapon provides crucial self-defense. the intro is that Assam government ने decide किया है to issue arms licenses to eligible indigenous communities in remote areas near the Bangladesh border.
Background classification includes Assamese Hindus, Koch Rajbongshis, Bodos, Rabas, Mishings, Tivas, Sonowal Kacharis. कॉर लॉजिक ये है कि लाइसेंसेज इंटरस्टेट बॉर्डर्स के पास कम्युनिटीज को नहीं मिलेंगे। अंडर आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स रूल्स 2016 लाइसेंसेज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, बट यहाँ वल्नरेबल एरियाज के लिए एक्सेप्शन बनाया जा रहा है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी डायनामिक्स इज ह्यूज। UPSC focus is on Arms Act provisions and names of Assam native tribes. Conclusion. Strategic empowerment of locals to act as a first line of defense. Cross questions time. Arms licenses किस स्पेसिफिक बॉर्डर के पास मिलेंगे? बांग्लादेश बॉर्डर के पास रिमोट एरियाज में। क्या ये इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर भी वैलिड है? नहीं, इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर अप्लाई नहीं होगा। किस एक्ट के अंडर लाइसेंसेस रिस्ट्रिक्टेड होते हैं? आर्म्स एक्ट 1959 एंड आर्म्स रूल्स 2016। कोई दो इंडिजिनस कम्युनिटीज के नाम बताओ। कोच राजबोंगशीज और बोडोज। इसका मेन गोल क्या है? वल्नरेबल इंडिजिनस कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करना। Now pause and practice saying Arms Act 1959 restricts but Assam empowers indigenous Bodos. In short, Assam is empowering native tribes near the Bangladesh border with arms for self-defense under strict rules. Topic name. Nagas. Broad micro theme. Securing India's frontiers. The ongoing Naga political movement and the geographical spread of the Naga tribes. A community split across two nations trying to retain its unified cultural identity. Intro shows NSCN Isak Muiwa faction, yani NSCN IM, is a key organization in the Naga movement. Background is that the larger Naga world covers over 57,400 square kilometers, divided between India and Myanmar's Naga self-administered zone in Sagaing region. Core logic is that NSCN IM signed the framework agreement with Government of India in 2015. Thoingaling Muiwa is revered as Avakrar, meaning eldest father or godfather in the Tangkhul language. Real-world impact is crucial for internal security essays. UPSC focus is the 2015 framework agreement and geographical spread. Conclusion is that the Naga issue is deeply rooted in transnational geography and cultural identity. Drill time. नागा अग्रीमेंट किस फैक्शन ने साइन किया था? NSCN Isak Muiwa faction ने ये फ्रेमवर्क अग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2015 में। अवक्रार का मतलब क्या होता है? Eldest father और godfather. अवक्रार किस लैंग्वेज का वर्ड है? Tangkhul language का। नागा सेल्फ एडमिनिस्टर्ड जोन किस कंट्री में है? म्यांमार के सगाइंग रीजन में। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग NSCN IM signed the 2015 framework agreement. In short, the Naga movement involves a massive transnational area and the historic 2015 NSCN IM framework. Next, topic name FSPA. Broad micro theme. Securing India's frontiers. Armed Forces Special Powers Act, a strict 1958 law giving special powers to armed forces in disturbed areas. Imagine an army unit needing to quickly search a hideout without waiting for a court warrant to stop a terror attack. Intro. MHA extended AFSPA in parts of Manipur, Arunachal Pradesh and Nagaland for 6 months. Background, enacted in 1958, provides protection from prosecution without union government sanction. Core logic is it applies to disturbed areas declared by governor or central government. Section 4 allows firing after warning, warrantless arrests, searches, and destroying hideouts. Section 6 grants legal immunity, currently in force in Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, and J&K. Real-world impact is it's a highly debated human rights versus security issue. UPSC focuses Section 4 powers and Section 6 immunity. Conclusion, FSPA remains a powerful yet controversial tool for counter-insurgency. Let's do the questions. AFSPA कब इनैक्ट हुआ था? 1958 में। डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर कर सकता है? गवर्नर या सेंट्रल गवर्नमेंट। वारंटलेस अरेस्ट किस सेक्शन में अलाउड है? सेक्शन 4 के अंडर। लीगल इम्यूनिटी किस सेक्शन से मिलती है? सेक्शन 6 है। प्रोसिक्यूशन के लिए किसकी अप्रूवल चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। Now, pause and practice saying Section 4 gives power, Section 6 gives immunity in FSPA. In short, FSPA 1958 grants vast operational powers and legal immunity in designated disturbed areas. Next up, topic name Reserved Areas. Broad micro theme, securing India's frontiers. Reserved areas in Ladakh. 52 villages along LAC and LOC declared reserved for socio-economic benefits. Living in a freezing, tense border zone is tough, so these benefits act as a reward and support system for locals. Intro. Administration of Ladakh declared 52 villages along LAC and LOC as reserved areas. Background. The declaration follows a structured process via a one-member commission under Justice Bansi Lal Bhatt. Core logic? Residents will receive reservation benefits in recruitment and government jobs. This supports socio-economic development of strategically important areas. Real-world impact is the direct integration of border populations. UPSC focus, Justice Bansilal Bhatt Commission. Conclusion. Keeping border populations prosperous is a smart strategic defense move. Questions. कितने villages को reserve declare किया गया है? 52 villages को. ये villages कहाँ located है? लद्दाख में LAC और LOC के along. किस commission ने ये process initiate किया?
जस्टिस बंसीलाल भट्ट कमीशन ने। इसका मेन बेनिफिट क्या है लोकल्स के लिए? रिक्रूटमेंट और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन, इसका स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Justice Bansilal Bhatt Commission for Ladakh Reserved Areas. In short, 52 Ladakh border villages get job reservations to boost strategic socio-economic development. Right. Topic name: Village Guards. Broad micro theme: securing India's frontiers. Village Defense Guards या VGDs, civilians armed and trained by BSF to defend their border villages. जब टेररिस्ट अटैक होता है, आर्मी आने तक आर्म्ड लोकल्स खुद फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाते हैं. Intro: Post Operation Sindoor, BSF ने arms training start की for VDGs along Jammu border. Background: The scheme पहले 1995 में स्टार्ट हुई थी in 10 districts of Jammu जब हिंदू community was targeted. Core logic: revived in 2022 amid a resurgence in terrorist activity. Civilians are armed to protect their communities against infiltrators. Real world impact shows a community policing model. UPSC focus on VDG revival timeline and associated border. Conclusion: Local empowerment is a crucial anti-terror tactic in volatile regions. Let's review. Village TG को ट्रेनिंग कौन दे रहा है? BSF यानी Border Security Force. किस ऑपरेशन के बाद ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई? ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये स्कीम ओरिजिनल कब स्टार्ट हुई थी? 1995 में, इसे रिसेंटली कब रिवाइव किया गया? 2022 में, ये मेनली किस एरिया के लिए है? जम्मू बॉर्डर विद पाकिस्तान. Now, pause and practice saying VDG scheme started in 1995. Revived in 2022. In short, BSF is training local Jammu civilians as village defense guards to counter-rising terrorism. Moving forward, Topic name: infiltrators, Broad micro theme: securing India's frontiers. Border fencing and FMR. Securing borders through physical fences and regulating movement. बिना फेंस के बॉर्डर ऐसी बाउंड्री है जैसे बिना दरवाजे का घर. Fencing and passes fix this. Getting stricter regulations to stop infiltrators. Background: India-Myanmar border is 1,643 km long, पर सिर्फ 9.2 km fenced है अभी. Core logic: Following the 2023 Manipur violence, the Free Movement Regime (FMR) was regulated. Territorial limits reduced from 16 kilometers to 10 kilometers, or 43 designated entry-exit gates, biometrics और gate passes introduce किए गए. Fencing status की बात करें, India-Pakistan is 93.25% fenced and India-Bangladesh is 79.08% fenced. Real-world impact is vital border management stats. UPSC focus: FMR limit reduction and border lengths. Conclusion: We are moving from an open border policy to a highly regulated, biometric-enabled frontier. Cross questions: India-Myanmar की total length कितनी है? 1,643 किलोमीटर. FMR की नई लिमिट क्या है? 16 किलोमीटर से रिड्यूस करके 10 किलोमीटर कर दी गई है. FMR कंट्रोल करने के लिए कितने गेट्स बनाए गए? 43 designated entry-exit gates. इंडिया-पाकिस्तान बॉर्डर कितना परसेंट फेंस्ड है? 93.25%. इंडिया-बांग्लादेश बॉर्डर कितना परसेंट फेंस्ड है? 79.08%. Now pause and practice saying FMR reduced to 10 kilometer, 43 biometric gates added. In short, FMR on the Myanmar border is tightened with biometric gates, while Pak and Bangladesh borders are mostly fenced. Awesome. Topic name: LWE measures. Broad micro theme: the final push against Naxalism. Left-wing extremism countermeasures. The government's multi-force strategy to eliminate Naxalism. Imagine jungle warfare, jahan specialized forces like Cobra stealthily hunt down insurgents in deep forests. Intro: Basav Raju, CPI Maoist General Secretary. Killed in Chhattisgarh by CRPF and DRG. The target is to eliminate Naxalism by March 2026. Background: Maoists originally had safe havens in Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh. Core logic: NSG, the elite counter-terror force that draws 100% personnel from CAPFs and army, was deployed in LWE-affected Gadchiroli. Cobra is Commando Battalion for Resolute Action, a specialized CRPF unit for jungle warfare. DRG, District Reserve Guard, comprises surrendered Maoists. Right, DRG played a pivotal role in Operation Black Forest in Kharegutta Hills. Mission Sankalp aims to eliminate LWE in Bastar, deploying 24,000 personnel. Surrender policies offer 1.5 lakh grant and a 2,000 stipend. Real-world impact is security forces dynamics. UPSC focus on Cobra, DRG composition, Operation Black Forest. Conclusion: A mix of elite forces and surrendered locals is breaking the Maoist backbone. Let's do the drill. CPI Maoist का जनरल सेक्रेटरी कौन था जो रिसेंटली मारा गया? Basav Raju. नक्सलिज्म एलिमिनेट करने का टारगेट डेट क्या है? March 2026. NSG पहली बार किस LWE एरिया में डिप्लॉय हुआ? गढ़चिरौली महाराष्ट्र में. DRG किन लोगों से बनती है? Surrendered Maoists और former Salva Judum members से. ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हुआ था? Kharegutta Hills में. Now pause and practice saying DRG uses surrendered Maoists for Operation Black Forest.
In short, specialized forces like Cobra, NSG, and DRG are running massive operations like Mission Sankalp to end LWE. हे दोस्त, अगर ये डीप डाइव तुम्हारे दिमाग के सारे वायर्स कनेक्ट कर रहा है और यूपीएससी प्रेप को लेवल अप कर रहा है, तो फटाफट सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। ऐसे किलर नोट्स और इनसाइट्स हम रोज लाते हैं। ओके, बैक टू द ग्राइंड। टॉपिक नेम: Naxalism 11 districts. ब्रॉड माइक्रो थीम, द फाइनल पुश अगेंस्ट नक्सलिज्म। The shrinking red corridor, the geographical decline of Naxal influence in India. एक टाइम था जब पशुपति इन नेपाल से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर था। अब वो सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में सिमट गया है। Intro is that the number of most affected districts has fallen from 6 to 3. Background: in 2013, 126 districts were affected. अब रेड कॉरिडोर significantly reduce हो गया है। Core logic is the three most affected are Bijapur, Sukma, and Narayanpur, all in Chhattisgarh. Other affected include Dantewada, Kanke, Gadchiroli, etc. Real-world impact shows the success of security and development efforts. UPSC focuses the names of the three most affected districts. Conclusion: focused operations ने नक्सल geography को drastically shrink कर दिया है। Questions: Most affected districts 6 से कितने हो गए हैं? सिर्फ 3 रह गए हैं। ये 3 districts कौन से हैं? बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। ये तीनों districts किस स्टेट में हैं? छत्तीसगढ़ में। 2013 में कितने districts affected थे? 126 districts। Historical red corridor कहाँ से कहाँ तक था? पशुपति इन नेपाल से तिरुपति इन आंध्र प्रदेश तक। Now pause and practice saying Bijapur, Sukma, Narayanpur are the last 3. In short, sustained security efforts have collapsed the massive red corridor into just 3 highly affected districts in Chhattisgarh. Next, topic name, Bastar and Naxalism. Broad micro theme: the final push against Naxalism. Bastar's transformation. Shifting Bastar from a Naxal hub to a developed district using sports and operations. Imagine former insurgents leaving guns to participate in sports tournaments. Intro: Home Minister declared Kankar, Kondagaon, Bastar, Sukma, Bijapur, Dantewada, Narayanpur will be the most developed tribal districts by DEC 2030. Background: Naxal movement started as a peasant uprising in 1967 at Naxalbari in West Bengal, revived in AP in 1980. Maoists established Janatana Sarkar, a parallel government. Or logic, Bastar Olympics is an annual mega sports event in Jagdalpur involving all 7 districts and surrendered Maoists. Union government launched Operation Kagar, also known as Black Forest, in 2025, involving forces like Cobra, DRG, SOG in Odisha, Greyhounds in AP, and C60 in Maharashtra. Real-world impact is the soft power plus hard power. UPSC focus is state-specific anti-Naxal forces like Greyhounds and C60. Conclusion: development, sports, and strict operations are dismantling the Janatana Sarkar. Q&A time. बस्तर को मोस्ट डेवलप्ड बनाने का टारगेट ईयर क्या है? December 30. बस्तर ओलंपिक्स कहाँ होल्ड होता है? जगदलपुर में। नक्सल मूवमेंट ओरिजिनली कब और कहाँ स्टार्ट हुआ? 1967 में नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में। ग्रेहाउंड्स किस स्टेट की एंटी नक्सल फोर्स है? आंध्र प्रदेश की। C60 किस स्टेट की फोर्स है? महाराष्ट्र की। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग ग्रेहाउंड्स इन AP, C60 in Maharashtra, SOG in Odisha. In short, Bastar is fighting Naxalism through sports like the Bastar Olympics and joint operations like Operation Kagar. Topic name, Abujmat. Broad micro theme: the final push against Naxalism. The incomprehensible plateau, a massive, unsurveyed, dense forest that was a Naxal safe haven. A forest larger than Goa, where government development couldn't reach since 1935, creating a liberated zone for insurgents. Intro: Abujmat means incomprehensible plateau. It's been declared free of Naxalism. Background: it's a dense forest across Narayanpur, Bijapur, Dantewada, and Gadchiroli, home to around 40,000 Abujmadiya tribals, who are PVTGs. Declared excluded area under Government of India Act 1935. Core logic, Maoists called it a liberated zone. Note that Maoism relies on agrarian revolution and guerrilla warfare. Naxalism is its Indian variant, and urban Naxal refers to intellectual or financial supporters. Government launched PN Janman for PVTGs, DAJBUA for saturation coverage of schemes, and EMRS. Dharti Aba means father of the earth, a title for Birsa Munda. Real-world impact is tribal welfare integration, UPSC focus, DAJBUA, PVTGs, and meaning of Abujmad. Conclusion: bringing governance to an unsurveyed plateau kills the roots of insurgency. Let's do the questions. अबुजमद का मतलब क्या है? Incasable plateau. इस एरिया को किस एक्ट के अंडर एक्सक्लूडेड एरिया बोला गया था? Government of India Act 1935. धरती आबा किसका टाइटल है? बिरसा मुंडा का, meaning father of the earth. PM जनमान स्कीम किसके लिए है? PVTGs यानी particularly vulnerable tribal groups के socio-economic status के लिए. DAJBUA का प्राइमरी पर्पस क्या है? Saturation coverage of government schemes in health, education, etc. Now pause and practice saying Abujmad means incomprehensible plateau for PVTGs. In short, the impenetrable Abujmad forest is finally seeing governance through PVTG welfare schemes like PM Jinman and DAJBUA. Next, topic name DDoS. Broad micro theme: the invisible war online.
Distributed denial of service, crashing a server by flooding it with fake traffic from multiple compromised devices. सोचो एक छोटी सी दुकान पे अचानक 1 लाख लोग घुस जाएं सिर्फ रास्ता ब्लॉक करने के लिए, दुकान क्रैश, that's DDoS. Intro. FM chaired a meeting to review cybersecurity of India's financial institutions. Background: banks must designate 2 senior officials, one for cyber incident reporting and one for operational continuity, like ATM cash. Firm deployment of anti-DDoS systems. DDoS leverages multiple compromised systems called a botnet to flood a target, unlike DOS, which uses a single source. Capture can identify and block automated bots. Real-world impact is financial sector vulnerability. UPSC focuses the difference between DOS and DDoS and the role of botnets. Conclusion: anti-DDoS and captures are the digital bouncers of a banking system. Questions: बैंक्स को कितने सीनियर ऑफिशियल्स डेजिग्नेट करने पड़ेंगे साइबर इश्यूज के लिए? 2 officials. DDoS और DOS में मेन डिफरेंस क्या है? DDoS multiple compromised systems या botnet यूज करता है. DOS single source. कॉम्प्रोमाइज सिस्टम्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? Botnet. ऑटोमेटेड बॉट्स को ब्लॉक करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? Capture. ATM कैश अवेलेबिलिटी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? Operational continuity वाले official की. Now pause and practice saying botnets power DDoS attacks. Captures block them. In short, financial institutions are fighting coordinated botnet traffic jams using robust anti-DDoS systems. Topic name: cyberbullying. Broad micro theme: the invisible war online. Legal gaps in cyberbullying. How India's laws struggle to handle persistent online harassment. कोई तुम्हें ऑनलाइन anonymously रोज harass करे, पर लॉ explicit नहीं है unless वो obscenity या direct threats involve करे. Intro. India lacks a dedicated law to address online hate speech and sustained trolling. Background: existing laws are BNS Sec 74 for outraging modesty, 75 for sexual harassment, 351 for criminal intimidation. IT Act Sec 60C for identity theft, 66D for impersonation, 67 for obscene material. Core logics. These laws don't explicitly criminalize persistent, non-obscene, anonymous online abuse. Sec 69A of IT Act blocks content for public order. Non-compliance removes the safe harbor under Sec 79. Doxing, which is publishing private info, is a serious threat. DPDPA exempts publicly available data but fails to define it. NCII, non-consensual intimate image abuse, covers deepfakes made without consent. Real-world impact is a major legal loophole in the digital age. UPSC focuses Sec 69A versus Sec 79 of IT Act and NCII definition. Conclusion: technology is moving faster than legislation, leaving victims vulnerable. Drill time. क्या इंडिया में ऑनलाइन हेट स्पीच के लिए डेडिकेटेड लॉ है? नहीं, कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है. IT एक्ट का सेक्स 66C किस चीज से डील करता है? आइडेंटिटी थेफ्ट से. सेफ हार्बर प्रोटेक्शन IT एक्ट के किस सेक्शन में आती है? सेक्शन 79 में. डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है? किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सर्च और पब्लिश करना. NCII का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कॉन्सेंशुअल इंटीमेट इमेज अब्यूज. Now pause and practice saying Section 69A blocks content. Section 79 gives safe harbor. In short, despite various BNS and IT Act sections, India desperately needs laws specifically defining doxing, deepfakes, and persistent cyberbullying. Moving on. Topic name: CoinDCX breach. Broad micro theme: the invisible war online. Cryptocurrency hacks and stablecoins. How crypto wallets get compromised and the geopolitical shift towards digital currency. एक डिजिटल वॉलेट जो इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड है यानी हॉट वॉलेट, उसको हैक करना आसान है कंपेयर टू एन ऑफलाइन वॉलेट. Intro. Crypto exchange CoinDCX disclosed an internal operational account was hacked, similar to the 2024 WazirX hack of $230 million by North Korean attackers. Background: an operational hot wallet on a partner exchange was compromised via a server breach. Fortunately, no customer funds were compromised. Core logic. Globally, US passed Genius Act, Clarity Act, Anti-CBDC Act. Genius Act enables issuance of stablecoins, which are asset-backed crypto indexed to US dollar or treasury bills. Trump sees stablecoins as a way to strengthen the US dollar against de-dollarization after the 2022 Russia sanctions. Countries are buying gold to protect reserves from asset freezes. Real-world impact is the intersection of cyber threats and global economy. UPSC focus is hot versus cold wallets, Genius Act, and stablecoins. Conclusion: as crypto grows, the line between cybersecurity and national economic security blurs. Cross questions. हॉट वॉलेट क्या होता है? Cryptocurrency wallet जो continuously इंटरनेट से कनेक्टेड होता है. WazirX हैक में किस कंट्री के अटैकर्स इन्वॉल्व थे? North Korean attackers. यूएस में स्टेबल कॉइन्स इशू करने के लिए कौन सा एक्ट पास हुआ? Genius Act. स्टेबल कॉइन क्या होता है? Asset-backed cryptocurrency जैसे US डॉलर से indexed. रशिया सैंक्शंस के बाद ग्लोबल ट्रेंड क्या है? Countries gold purchase बढ़ा रही हैं to avoid asset freezes known as de-dollarization. Now, pause and practice saying hot wallets stay connected, stable coins stabilize crypto. In short, crypto exchange breaches highlight hot wallet risks,
while the US uses the Genius Act and stablecoins to maintain dollar dominance. Topic name: Quantum Cyber Readiness. Broad micro theme: the invisible war online. The quantum threat to encryption. Future quantum computers could instantly break today's secure passwords. तुम्हारा encrypted WhatsApp मैसेज आज सेफ है, पर हैकर्स आज डेटा चुराकर कल जब क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे डिक्रिप्ट करने के लिए सेव कर रहे हैं. Intro, MITI. CERTIN and CISA launched a white paper. Transitioning to quantum cyber readiness. Background: current encryption algorithms, especially RSA-based, are vulnerable. Core logic: quantum computers can solve complex optimization and machine learning problems much faster. The main threat is HNDL, harvest now, decrypt later attacks. Hackers store encrypted data now to decrypt it when quantum tech matures. Real-world impact is the future of cybersecurity. UPSC focus is HNDL attacks and RSA cryptography vulnerability. Conclusion: we must upgrade our digital locks before the thieves get their quantum keys. Questions: क्वांटम रेडिनेस का व्हाइट पेपर किसने लॉन्च किया? MITI, CERTIN और CISA ने. करंट कौन सी क्रिप्टोग्राफी सबसे ज्यादा खतरे में है? RSA-based cryptography. HND अटैक का फुल फॉर्म क्या है? Harvest now, decrypt later. HND में हैकर्स क्या करते हैं? आज encrypted data चुराकर स्टोर करते हैं ताकि फ्यूचर में डिक्रिप्ट कर सकें. क्वांटम कंप्यूटर्स किन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं? Complex machine learning और optimization problems. Now, pause and practicing harvest now, decrypt later is a quantum threat. In short, quantum computers threaten RSA encryption, making harvest now, decrypt later a massive looming cyber threat. Topic name: APK scam. Broad micro theme: the invisible war online. APK fraud and cybercrime portal. Malicious apps tricking users to grant permissions and spread malware. एक मैसेज आता है, डाउनलोड दिस ऐप फॉर फ्री इलेक्ट्रिसिटी. तुम APK इंस्टॉल करते हो और बैंक अकाउंट खाली. Intro: India is witnessing a surge in APK fraud mimicking official portals. Background: National Cybercrime Reporting Portal was launched in 2019, dedicated to the nation in 2020 under I4C by MHA. Core logic allows online reporting of 24 crime types like financial frauds, ransomware, cyberbullying. Features anonymous filing for sensitive cases and evidence upload. Users can track complaints via reference ID. Real-world impact is, it's a vital citizen awareness tool. UPSC focus on I4C and National Cybercrime Reporting Portal features. Conclusion: never download unverified APKs and report frauds quickly on the national portal. Drill time: National Cybercrime Reporting Portal कब लॉन्च हुआ? 2019 में. ये पोर्टल किस एजेंसी के अंडर आता है? MHA के अंडर I4C में. क्या इस पोर्टल पर अनोनिमसली कंप्लेन कर सकते हैं? हाँ, सेंसिटिव केसेस के लिए अनोनिमस फाइलिंग अलाउड है. कंप्लेंट ट्रैक करने के लिए क्या मिलता है? एक रेफरेंस आईडी. पोर्टल कितने टाइप के क्राइम्स कवर करता है? 24 crime types. Now pause and practice saying report APK scams on the National Cybercrime Portal. In short, fake APK apps are looting users, but the MHA's cybercrime portal provides a robust, anonymous reporting mechanism. Next, topic name: 2FA. Broad micro theme: the invisible war online. Two-factor authentication and cyber frauds. Adding a second layer of security beyond just your password. घर के दरवाजे पे ताला या पासवर्ड और अंदर एक और बायोमेट्रिक लॉक. That is 2FA. Intro: 2FA adds a second layer. Widely uses Google Authenticator and TOTP, time-based one-time password. Background: first factor is knowledge, your password. Second factor is possession, the Authenticator app. OTPs are valid for around 30 seconds. Core logic: TOTP uses cryptographic function HMAC SHA-256 to generate codes. Both device and server compute the same code. Hash function is one way. Other methods include HOTP, which is counter-based, push-based apps, and hardware tokens like YubiKeys. Real-world impact: protects against phishing, remote access scams, and digital arrests. Digital impersonation is punishable under Section 66D of IT Act 2000 with up to 3 years jail and 1 lakh fine. Karnataka accounted for over 25% of cybercrime cases in 2023 and established the first dedicated city-level cybercrime police station. Conclusion: 2FA is your digital armor against rapidly evolving identity theft. Let's do the questions. 2FA के दो factors basically क्या होते हैं? पहला जो तुम्हें पता है यानी पासवर्ड. दूसरा जो तुम्हारे पास है यानी ऐप. TOTP में T का मतलब क्या है? टाइम बेस्ड. TOTP कोड्स जनरेट करने के लिए कौन सी फंक्शन यूज होती है? HMAC SHA-256. डिजिटल इम्पर्सोनेशन IT एक्ट के किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 66D में. इंडिया का पहला सिटी लेवल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन किस स्टेट में बना? कर्नाटका में. Now pause and practice saying TOTP uses HMAC SHA-256 for 30-second security. In short, 2FA using TOTP and hardware tokens defends against scams like digital arrests, which are punishable under IT Act Sec 66D. Topic name: Scam hubs in Southeast Asia. Broad micro theme: the invisible war online. The pig butchering syndicates. Purpose-built scam compounds in SE Asia running massive global frauds. किसी को रोमांस या इन्वेस्टमेंट का लालच देकर पहले फैटन करना,
फिर अचानक सारा पैसा लूट लेना, लिटरली पिग बुचरिंग। Intro. Around 500 Indian citizens recently freed from KK Park cybercrime hub in Myanmar. Mayawadi, Myanmar is on the Myanmar-Thailand border, controlled by Junta Allied Border Guard Force, BGF. Cambodia is also a major hub. Core logic, pig butchering involves romance on investment fraud via fake crypto platforms. Digital arrest involves fraudsters impersonating law enforcement on video calls, extorting money. Supreme Court asks Center to ratify UN Convention against Cybercrime. India has not signed yet. Cybercrime surged 31.2% in 2023, with fraud accounting for the majority. Karnataka reported highest cases. Real-world impact is transnational organized crime. UPSC focus on UN Convention on Cybercrime and pig butchering definition. Conclusion, scamming is now an industrialized, borderless syndicate operation. Questions. KK Park cybercrime hub कहाँ located है? म्यावडी, म्यांमार में. इस एरिया को कौन कंट्रोल करता है? जुंटा अलाइड बॉर्डर गार्ड फोर्स यानी BGF. फेक रोमांस और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाले स्कैम को क्या कहते हैं? पिग बुचरिंग. फेक वीडियो कॉल से एक्सटॉर्ट करने वाले स्कैम का क्या नाम है? डिजिटल अरेस्ट. क्या इंडिया ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम साइन किया है? नहीं, अभी तक साइन नहीं किया है. Now pause and practice saying pig butchering and digital arrests run from Myanmar. In short, organized cyber compounds in Myanmar and Cambodia run digital arrest and pig butchering, highlighting the need for global cyber treaties. Topic name: GPS spoofing. Broad micro theme. The invisible war online. Aircraft navigation attacks. Sending fake GPS signals to trick aircraft navigation systems. तुम्हारे मैप ऐप पे अचानक दिखाए कि तुम समुंदर में हो जबकि तुम हाईवे पे हो. एयरक्राफ्ट्स के साथ यही हो रहा है. Intro. Aircraft over Delhi experienced severe GPS spoofing, causing false navigation and misleading terrain warnings. Background. Spoofing is a cyber attack transmitting counterfeit signals, usually seen in border or conflict zones, but incidents over Delhi are unusual. Delhi emerged as a top 10 global hotspot. Core logic doesn't hamper safety directly. Due to redundancies like inertial reference system, which operates safely up to 5 hours, India has NAVIC, Navigation with Indian Constellation by ISRO. CERT-In, under Sec 70B of IT Act, manages cyber incidents. Cyber Swachhta Kendra detects malicious botnets and provides free malware analysis tools. Real-world impact is a huge aviation security risk. UPSC focus on NAVIC, Inertial Reference System, Sec 70B for certain. Conclusion, even the skies aren't safe from cyber spoofing, but redundancy systems save the day. Drill time, GPS spoofing exactly क्या करता है? fake signals भेजकर navigation system को mislead करता है. GPS फेल होने पर एयरक्राफ्ट का कौन सा सिस्टम बैकअप देता है? Inertial Reference System, ये बैकअप सिस्टम कितनी देर तक काम करता है? up to 5 hours. ISRO का इंडिपेंडेंट नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? NAVIC, अच्छा, साइबर स्वच्छता केंद्र का मेन काम क्या है? malicious botnets detect करना और free malware analysis tools देना. Now pause and practice saying spoofing, fakes GPS, NAVIC is India's own GPS. In short, GPS spoofing over Delhi is alarming, but aircraft redundancies, like the Inertial Reference System and ISRO's NAVIC, provide crucial backups. Moving on, topic name, mule bank accounts. Broad micro theme, the invisible war online. Layering cybercrime proceeds, criminals using third-party bank accounts to hide stolen money. चोर ने पैसा चुराया और तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल दिया, फिर वहां से आगे ट्रांसफर किया, ताकि ट्रेल तुम पर रुके. Intro. Mule bank accounts are used to launder proceeds from investment scams and digital arrests. Background, the money trail is obscured through layered transactions. Core logic is criminals rent or trick innocent people into letting them use their accounts. To counter this, RBI has launched mulehunter.gi for detection. Real-world impact, banking fraud mechanisms, UPSC focus, RBI's mulehunter.ai initiative. Conclusion, AI is now hunting the digital mules carrying dirty money. Questions. Mule bank accounts किस लिए यूज होते हैं? साइबर क्राइम्स का पैसा लॉन्डर या हाइड करने के लिए. पैसा हाइड करने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लेयरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए आरबीआई ने क्या लॉन्च किया है? mulehunter.ai. क्या लोग नोइंगली अपना अकाउंट देते हैं? मोस्टली उनको ट्रिक किया जाता है या रेंट पर लिया जाता है. ये किन स्कैम्स का पैसा हाइड करता है? इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और डिजिटल अरेस्ट का. Now pause and practice saying RBI uses mulehunter.ai to catch mule accounts. In short, cyber criminals layer stolen money through mule accounts. But RBI's new mulehunter.ai is stepping up the detection game. Topic name. Wi-Fi signals for surveillance. Broad micro theme, the invisible war online. Seeing through walls with Wi-Fi. Using standard Wi-Fi router signals to track human movement inside a room. तुम्हारा Wi-Fi router Batman के sonar vision की तरह काम कर सकता है, detecting your physical movement. Intro. Modern Wi-Fi beamforming uses unencrypted beamforming feedback information, BFI, to steer signals. Background. Researchers at Karlsruhe Institute found BFI can identify individuals moving through a room by how bodies disturb signals.
Core logic. Unlike CSI, channel state information, which needs specialized hardware, BFI is accessible on off-the-shelf equipment. It outperforms CSI in accuracy. No network password needed. Attacker just needs a listening device nearby. Creates an inverse panopticon, yani covered tracking. Identifies gait, breathing, leading to massive privacy risks. Real-world impact is a massive privacy loophole. UPSC focus on BFI versus CSI and the inverse panopticon concept. Conclusion: our own home networks are broadcasting our physical presence to anyone listening. Drill time. वाईफाई सिग्नल्स में मूवमेंट ट्रैक करने के लिए क्या यूज होता है? BFI यानी बीमफॉर्मिंग फीडबैक इंफॉर्मेशन। BFI और CSI में बेटर एक्यूरेसी किसकी है? BFI की। क्या अटैकर को वाईफाई पासवर्ड चाहिए ट्रैक करने के लिए? नहीं, कोई पासवर्ड नहीं चाहिए। इस कोवर्ट सर्विलेंस कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया है? इनवर्स पैनोप्टिकन। BFI कितना डिटेल डिटेक्ट कर सकता है? इंसान का चलने का ढंग यानी गेट और प्रेजेंस। Now pause and practice saying BFI tracks movement without needing a Wi-Fi password. In short, unencrypted Wi-Fi BFI signals create an inverse panopticon, allowing covert human tracking without even joining the network. Topic name: VPN. Broad micro theme: the invisible war online. VPN regulations and ghost pairing. How VPNs mask identity, the governed regulations, and new WhatsApp hijacking hacks. VPN एक ऐसी डिजिटल टनल है जिसमें बाहर बैठे किसी कार्ड को नहीं दिखता तुम क्या ले जा रहे हो। Intro. Authorities suspended virtual private network services in Poonch and Rajouri for 2 months. Background. VPN encrypts traffic, masks IP, sidesteps website blocks. In 2022, certain directed VPN providers to maintain logs of Indian users. Core logic: VPN providers like ExpressVPN shifted India servers to Singapore to avoid logging. Separately, certain issued an advisory about ghost pairing attack. Ghost pairing hijacks WhatsApp accounts without passwords or SIM swaps by exploiting the linked devices feature, granting full access to chats. Real-world impact: data localization and app security. UPSC focus on certain 2022 VPN directives and ghost pairing mechanism. Conclusion: privacy tools are a double-edged sword, hiding both citizens and criminals. Questions: VPN ट्रैफिक के साथ बेसिकली क्या करता है? डेटा को एन्क्रिप्ट करता है और IP एड्रेस मास्क करता है। सर्टेन ने 2022 में VPN प्रोवाइडर्स को क्या ऑर्डर दिया? इंडियन यूजर्स के लॉग्स मेंटेन करने का। इस ऑर्डर के बाद एक्सप्रेस VPN ने क्या किया? अपने सर्वर्स इंडिया से सिंगापुर शिफ्ट कर लिए। WhatsApp अकाउंट हाईजैक करने वाले नए अटैक का नाम क्या है? गोस्ट पेयरिंग। गोस्ट पेयरिंग WhatsApp के किस फीचर को एक्सप्लॉइट करता है? लिंक्ड डिवाइसेस फीचर को। Now pause and practice saying ghost pairing hijacks WhatsApp via linked devices. In short, while VPNs face strict data logging rules by certain, new threats like ghost pairing silently hijack WhatsApp accounts. Next, topic name: NatGrid. Broad micro theme: the invisible war online. The ultimate intelligence database, a master database connecting multiple intelligence sources for security agencies. जैसे पुलिस को पहले 10 अलग ऑफिसेज में फोन करना पड़ता था इंफॉर्मेशन के लिए, अब सब कुछ एक क्लिक पे स्क्रीन पर है। Intro: National Intelligence Grid, या NatGrid, is for secure access to government and private databases in real time. Background: conceptualized in 2009, operationalized last year, provides info on a single platform instead of seeking data from multiple sources. Core logic: Union Home Ministry asks states to use it liberally. Access now available to SP rank officers. Linked to National Population Register, NPR, that has family details of 119 crore residents. Organized crime network database developed on NatGrid to share data between NIA and ATS. Upgraded tools like Gandhiva support multi-source data collection and facial recognition. Real-world impact is seamless intelligence integration. UPSC focus on NatGrid purpose and the Gandhiva tool. Conclusion: NatGrid is the central nervous system of India's internal security intelligence. Drill time: NatGrid किस ईयर में कंसेप्चुलाइज हुआ था? 2009 में। अब किस रैंक के ऑफिसर को NatGrid एक्सेस मिल गया है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP रैंक को। NatGrid किस पॉपुलेशन डेटाबेस से लिंक्ड है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR से। NIA और ATS के डेटा शेयरिंग के लिए कौन सा नेटवर्क बना है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस। NatGrid के अपग्रेडेड फेशियल रिकग्निशन टूल का नाम क्या है? Gandhiva. Now pause and practice saying NatGrid uses Gandhiva tool for facial recognition. In short, NatGrid eliminates Intel silos by linking massive databases like NPR and using tools like Gandhiva for real-time tracking. Topic name: Multi-agency center. Broad micro theme: evolving terror tactics. Upgrading the Terror Intel Network. MSA is a counter-terrorism grid connecting all police districts in India. एक पैन इंडिया व्हाट्सएप ग्रुप जहां सारी सिक्योरिटी एजेंसीज रियल टाइम थ्रेट इंटेल शेयर करती हैं। Intro: MHA inaugurated the revamped Multi-Agency Center MSC, a counter-terrorism grid originally post-Kargil war in 2001. Background: the new MHA connects all police districts securely, built at a cost of 500 crore rupees. Core logic: 28 organizations like RAW, Armed Forces, State Police are part of MSA, sharing real-time intelligence. Coordinates via subsidiary MAX, MSMA CS in states and districts.
upgraded in 2025, integrating AI and ML and GIS for predictive analytics and hotspot mapping. Connects NatGrid and CCTNS for seamless data fusion. Also, CBI organized a conference on extradition of fugitives. Real-world impact is cooperative federalism in security. UPSC focus on MAC establishment post-Kargil, connection with CCTNS and NatGrid. Conclusion, predictive AI mapping in MAC means stopping terror plots before they even start. Questions, मैक ओरिजिनली किस वॉर के बाद कंसेप्चुलाइज हुआ था? Kargil War 2001 के बाद, नए मैक प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई है? 500 crore rupees, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस मैक का पार्ट है? 28 organizations, स्टेट लेवल पर मैक को क्या बोलते हैं? subsidiary MACs यानी SMX, मैक किन दो मेजर डेटाबेसेस से कनेक्टेड है? NatGrid और CCTNS. Now pause and practice saying MAC uses AI and connects 28 agencies. In short, the post-Kargil multi-agency center is now a 500 crore AI-driven beast linking 28 intelligence agencies nationwide. Topic name: Delhi terror attack, Ricin. Broad micro-theme, evolving terror tactics. Biological warfare, the Ricin plot. Terrorists using extremely lethal natural toxins derived from castor beans. एक आम सा castor का बीज जिसका तेल हम यूज करते हैं, उसके वेस्ट से एक ऐसी पॉइजन बन सकती है जिसका कोई एंटीडोट नहीं है. Intro. Arrests were over a plot involving chemical weapons. 2 infiltrators killed in Operation Pimple in Kupwara. Background. Accused were developing ricin, an extremely lethal toxin derived from castor beans. Co-logic. India, Brazil, China are major castor oil producers. Seeds contain 30 to 60% castor oil. Ricin is 1 to 5% of the solid residue. Once consumed, ricin attaches to ribosomes, which are cell organelles made of RNA and protein responsible for reading genetic code. It stops protein synthesis, causing multi-organ failure and death. Most terrifying fact is, there is no antidote for ricin poisoning. Treatment is purely symptomatic. Real-world impact, bioterrorism threat, UPSC focus on ricin, source, mechanism on ribosomes, and lack of antidote. Conclusion, nature's trash can sometimes be a terrorist's treasure. Drill time. Ricin poison किस natural source से मिलता है? Castor bean से. कुपवारा में इन्फिल्ट्रेटर्स को किस ऑपरेशन में मारा गया? Operation Pimpa. बॉडी में एंटर करके राइसिन किस सेल ऑर्गेनल पर अटैक करता है? Ribosomes पर. राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है बॉडी में? Genetic code read करना और protein synthesis करना. क्या राइसिन का कोई स्पेसिफिक एंटीडोट है? नहीं, कोई antidote नहीं है. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग राइसिन स्टॉप्स राइबोसोम्स फ्रॉम मेकिंग प्रोटीन. In short, a busted terror plot revealed the use of ricin, an incurable toxin extracted from castor beans that destroys cellular ribosomes. टॉपिक नेम: Delhi terror attack FTIR. ब्रॉड माइक्रो थीम. Evolving terror tactics. Forensic science versus explosives. Advanced scientific methods used to analyze bomb materials. धमाके के बाद बची हुई थोड़ी सी राख से साइंटिस्ट्स एग्जैक्ट केमिकल बॉम्ब का फॉर्मूला निकाल लेते हैं. Intro. Forensic experts study absorbed light to determine chemical interactions. Background. Need to identify complex explosives fast. Co-logic. FTIR, Fourier transform infrared spectroscopy, analyzes how samples interact with infrared light. Raman spectroscopy determines chemical composition. SEM, scanning electron microscopy, analyzes morphology of explosion fragments. EDX, energy dispersive X-ray, used for elemental analysis. Thermal analysis determines chemical stability. Real-world impact is science applied to security. UPSC focus on matching the technique like FTIR, SEM, EDX with its specific function. Conclusion. Terrorists might hide their tracks, but they can't hide from infrared and electron microscopes. Questions. FTIR किस टाइप की लाइट यूज करता है एनालिसिस के लिए? Infrared light. केमिकल कॉम्पोजिशन निकालने के लिए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है? Raman spectroscopy. एक्सप्लोजन फ्रैगमेंट्स की शेप या मॉर्फोलॉजी कौन देखता है? SEM यानी scanning electron microscopy. एलिमेंटल एनालिसिस के लिए क्या यूज करते हैं? EDX यानी energy dispersive X-ray. एक्सप्लोजिव की स्टेबिलिटी कैसे चेक होती है? Thermal analysis से. Now pause and practice saying FTIR uses infrared, SEM checks morphology. In short, forensics use cutting-edge tech like FTIR, Raman spectroscopy, and SEM to deconstruct terrorist explosives at a molecular level. Next, topic name. Delhi terror attack, misuse of technology. Broad micro theme: evolving terror tactics. 3MA, dead drops, NTATP. How modern terrorists communicate silently and build undetectable bombs. ईमेल ड्राफ्ट में मैसेज लिखकर सेव कर दो, बिना सेंड किए. दूसरा बंदा वही अकाउंट लॉगिन करके ड्राफ्ट पढ़ ले. कोई ईमेल ट्रैवल ही नहीं हुआ. This is a dead drop. Intro. Terrorists used Swiss messaging app 3MA, which needs no phone number or email, uses random user ID, and has metadata deletion. Background. Communication was done via unsent drafts in a shared email account, yani dead drop emails, leaving no record. Core logic, explosive analysis, confirmed ammonium nitrate and TATP. PSO Petroleum and Explosive Safety Organization regulates fire and explosives.
TATP is known as the mother of Satan, an extremely sensitive peroxide-based bomb. It is nitrogen-free, evading standard nitrogen-detecting explosive scanners, generates almost no digital footprint, explodes via entropy burst. NIA, National Investigation Agency, was formed post-26/11 under NIA Act 2008. 2019 amendment broadened its powers. Real-world impact is the tech and chemistry of terrorism. UPSC focus on dead drop concept, TATP properties being nitrogen-free, PSO's role, and NIA 2019 amendment. Conclusion, the digital and chemical sophistication of modern terrorism requires equally smart countermeasures. Let's do the drill. टेररिस्ट ने कौन सा सिक्योर स्विस मैसेजिंग ऐप यूज किया? Threema, अनसेंट ईमेल ड्राफ्ट्स के थ्रू बात करने की टेक्निक को क्या कहते हैं? dead drop emails, एक्सप्लोसिव्स और फायर सेफ्टी इंडिया में कौन रेगुलेट करता है? PSO, किस एक्सप्लोसिव को मदर ऑफ सेटन कहा जाता है? TATP को, TATP स्टैंडर्ड स्कैनर्स को क्यों एवेड कर लेता है? क्योंकि वो नाइट्रोजन फ्री होता है. Now, pause and practice saying dead drop emails leave no trace. TATP is nitrogen free. In short, terrorists evade detection using Threema, dead drop emails, and the highly volatile, nitrogen-free mother of Satan, explosive TATP. Topic name. Anti-terror policy. Broad micro theme. Evolving terror tactics. Standardizing counter terrorism. Making a single playbook for all states to fight terrorism. अगर हर स्टेट की पुलिस अलग रूल्स फॉलो करे तो टेररिस्ट लूपहोल ढूंढ लेंगे. एक नेशनल टेम्पलेट उसको ब्लॉक करता है. In short, Government of India is finalizing the first anti-terror policy. Background discussed at the two-day Anti-Terrorism Conference 2025 organized by NIA. Core logic is it will serve as a template for states to combat and respond to terror attacks uniformly. Real-world impact is policy standardization. UPSC focused on the organizer of the conference, which is NIA. Conclusion, a uniform template means a unified impenetrable defense. Questions. GOI क्या फाइनलाइज कर रही है स्टेट्स के लिए? पहली एंटी-टेरर पॉलिसी. ये पॉलिसी स्टेट्स के लिए क्या काम करेगी? एक टेम्पलेट की तरह सर्व करेगी टेरर अटैक से डील करने के लिए. एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 किसने ऑर्गेनाइज की? NIA ने इस कॉन्फ्रेंस का ड्यूरेशन क्या था? 2 days. इस पॉलिसी का मेन गोल क्या है? Uniform response across all states. Now, pause and practice saying NIA drafts the first template for anti-terror policy. In short, the NIA is pushing India's first standardized anti-terror policy to ensure all states fight terrorism with the same rulebook. Topic name FATF. Pride microtheme. Choking terror funding. The Financial Action Task Force. The global watchdog tracking money laundering and terror financing. जैसे पुलिस क्रिमिनल्स को ट्रैक करती है, FATF उनके बैंक अकाउंट्स और फंडिंग को ट्रैक करके उनकी कंट्रीज को ब्लैकलिस्ट करता है. Intro. India seized dual-use autoclaves from a Pakistan-bound vessel, Daku Yun. FATF confirmed shipment was misdeclared and violated MTCR guidelines. Background. Autoclaves are critical for chemical coating of missile motors. Core logic. FATF was established in 1989 by G7 countries. HQ is in Paris. Evaluates member countries. Has 39 members. India joined in 2010. Grey list has countries with deficiencies in AML and CFT. Blacklist has non-cooperative countries. Currently, blacklist has 3: Iran, Myanmar, North Korea. 21 are on grey list. Real-world impact is international relations and economics. UPSC focus on FATF, origin, HQ, India joining year, blacklist countries. Conclusion, choking the money is often more effective than shooting the guns. Let's do the drill. FATF का फुल फॉर्म क्या है? Financial Action Task Force. इंडिया ने किस वेसल से ड्यूल यूज ऑटोक्लेव सीज किए? Da Kui Yun से. FATF कब और किसने एस्टैब्लिश किया? 1989 में G7 countries ने. इंडिया FATF का मेंबर कब बना? 2010 में. FATF के ब्लैक लिस्ट में अभी कितनी और कौन सी कंट्रीज हैं? 3 countries, Iran, Myanmar और North Korea. Now, pause and practice saying FATF, blacklist, Iran, Myanmar, North Korea. In short, FATF, born from the G7, controls global terror financing and currently blacklists Iran, Myanmar and North Korea. Topic name FATF report. Broad micro-theme, choking terror funding. State-sponsored terrorism recognized. FATF formally recognizing that some governments fund terrorism. पहले ग्रुप्स ब्लेम होते थे, अब सीधा उनको सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट का नाम रिपोर्ट में आता है. Introduction. FATF has for the first time included a separate section on state-sponsored terrorism. Background. Found on the 2025 Comprehensive Update on Terrorist Financing Risks. Core logic notes that terrorist organizations continue to receive financial and other support from national governments. India's 2022 National Risk Assessment identified Pakistan as a state sponsor. US's 2024 assessment noted threats from Pak, Afghan, and East Africa. Real-world impact is diplomatic leverage. UPSC focus on first-time inclusion of state-sponsored terror in FATF report. Conclusion.
Naming and shaming state sponsors on a global financial stage is a massive diplomatic win. Questions. FATF की रिपोर्ट में पहली बार क्या इंक्लूड हुआ है? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सेपरेट सेक्शन ये किस साल की रिपोर्ट में पब्लिश हुआ? 25 कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट में इंडिया के 2022 असेसमेंट ने किसे स्टेट स्पॉन्सर मार्क किया था? पाकिस्तान को, यूएस के असेसमेंट में किन रीजन से थ्रेट नोटेड है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईस्ट अफ्रीका। इस इंक्लूजन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? टेरर सपोर्टिंग स्टेट्स पर डायरेक्ट फाइनेंशियल प्रेशर। Now, pause and practice saying FATF 2025 formally highlights state-sponsored terrorism. In short, the FATF 2025 report makes history by explicitly dedicating a section to state-sponsored terrorism, cornering rogue nations. Next, topic name FTF Asset Recovery Framework. Broad micro theme, choking terror funding. Confiscating criminal wealth. New FAT guidelines to seize assets even without a criminal conviction. अगर तुम्हारे पास अनएक्सप्लेन्ड crores की संपत्ति है, अथॉरिटीज उसको सीज कर सकती हैं, तुम्हें अपना लॉफुल ओरिजिन प्रूव करना पड़ेगा. Intro, FATF released asset recovery guidance to trace, freeze, and return criminal assets. Background, India's ED, yani Enforcement Directorate cases are cited as models of effective asset recovery. Core logic. For the first time, FATF mandated non-conviction-based confiscation. It targets unexplained wealth orders, meaning individuals must prove the lawful origin of assets under reasonable suspicion. ED was established in 1956 under DAA, now under Dept of Revenue, enforces FEMA 1999 and PMLA. India became FATF observer in 2006, member in 2010. Real-world impact is financial law enforcement. UPSC focus on non-conviction-based confiscation, ED history, FEMA and PMLA timeline. Conclusion, the burden of proof has shifted. If you can't explain your wealth, you lose it. Drill time. FATF का नया रूल एसेट सीजर के बारे में क्या कहता है? Non-conviction-based confiscation allowed है. अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ पकड़े जाने पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? इंडिविजुअल को लॉफुल ओरिजिन प्रूव करना होता है. ईडी किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी? 1956 में ईडी मेनली किन दो फाइनेंशियल लॉज को एनफोर्स करती है? FEMA और PMLA. इंडिया फैट का ऑब्जर्वर कब बना था? 2006 में Now, pause and practice saying non-conviction confiscation shifts burden of proof. In short, FAT's new rules allow asset confiscation without conviction, requiring suspects to prove their wealth is legitimate, a move championed by India's ED. Topic name: Laundromat. Broad micro theme, choking terror funding. The mechanics of money laundering. How dirty money is washed through the system to look clean. चोरी का पैसा कैश में बैंक में डालना यानी प्लेसमेंट, उसे अलग अलग अकाउंट्स में घुमाना, that's layering, और एंड में एक घर खरीद लेना, integration. Intro. Since 2015, ED has taken up 5,892 cases under PMLA, but only 15 convictions secured. Background. The term laundromat originated in US crime syndicates. It's an all-purpose financial vehicle for hiding assets. Core logic, 3 stages. 1. Placement, introducing illicit money. 2. Layering, moving funds via investments. 3. Integration, reintroducing into economy. Defined under Sec 3 PMLA as projecting proceeds of crime as untainted. PMLA enacted in line with UN 1990 declaration. Burden of proof is on the accused. ECIR is similar to FIR. Scheduled offense required for prosecution, but property can be provisionally attached under Sec 5. Real-world impact is law enforcement hurdles. UPSC focus on 3 stages of laundering, PMLA Sec 3 definition and Sec 5 attachment. Conclusion, the process of cleaning money is highly complex, making convictions extremely rare. Questions. मनी लॉन्ड्रिंग की 3 बेसिक स्टेजेस क्या हैं? Placement, layering और integration. PMLA के अंडर कितने कन्विक्शंस हुए हैं 2015 से? सिर्फ 15 convictions. PMLA किस UN डिक्लेरेशन के अलाइनमेंट इनैक्ट हुआ था? UN 1990 declaration, PMLA में FIR के इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? ECIR. PMLA के अंडर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है? Accused par. Now pause and practice saying placement, layering, integration are the 3 stages. In short, despite the robust PMLA giving power to attach property and shift burden of proof, complex laundromat networks keep conviction rates extremely low. Topic name: Drone-driven drug smuggling. A broad micro-theme, the narco-terror nexus. high-tech narco routes, smugglers using drones to drop drugs across borders. बॉर्डर पे रात के अंधेरे में बिना आवाज के एक ड्रोन 5 kg हेरोइन गिरा के वापस चला जाता है. Intro. Rise in drone-based drug smuggling along India-Pakistan border in Punjab. Background, Death Crescent, which is Afghanistan, Pakistan, Iran, is main source of heroin and hashish entering western coast. Death Triangle, which is Myanmar, Thailand, Laos, is primary source of synthetic drugs like meth entering eastern coast. Core logic: NCB, Narcotics Control Bureau, established in 1986 under NDPS Act 1985 by MHA. Nodal agency coordinates with UNODC, INCB, Interpol. Headed by Narcotics Commissioner with 10 zonal offices. Empowered to investigate and prosecute. Real-world impact is security mapping. UPSC focus on Death Crescent versus Death Triangle geography. NCB establishment.
Conclusion: the geography of drug trafficking is shifting from ground mules to aerial drones. Drill time: इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे ड्रग्स कहाँ से आते हैं? डेथ क्रेसेंट से यानी अफगान पाक ईरान, ईस्टर्न कोस्ट पे सिंथेटिक ड्रग्स कहाँ से आते हैं? डेथ ट्रायंगल से यानी म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, पंजाब बॉर्डर पर ड्रग्स लाने के लिए अब क्या यूज हो रहा है? ड्रोन्स। एनसीबी कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1986 में अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985, एनसीबी किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी एमएचए। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग क्रेसेंट ऑन वेस्ट, ट्रायंगल ऑन ईस्ट. In short, the NCB is fighting a high-tech war against drone smuggling fed by the Western Death Crescent and the Eastern Death Triangle. Next, topic name Operation MedMax, Broad micro theme: the narco-terror nexus. cracking down on pharma drugs, stopping the illegal trade of pharmaceutical medicines used as drugs. कॉफ सिरप्स या पेन किलर्स को इलीगल नशे के लिए एक्सपोर्ट करना, जिससे बचाने के लिए मेगा ऑप्स होते हैं. Intro: NCB conducted an operation to crack down on illegal pharmaceutical drug trade. Background: pharma drugs are often diverted for recreational use across borders. Core logic: Operation MedMax targeted this specific illegal pharmaceutical syndicate, dismantled a transnational drug trafficking syndicate. Syndicate used encrypted digital platforms, dropshipping models, and cryptocurrency. Real-world impact is tech-driven crimes. UPSC focus on Operation MedMax objective. Conclusion: the modern drug cartel operates like a tech startup with crypto and dropshipping. Questions: Operation MedMax किसने कंडक्ट किया? NCB यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने. ये ऑपरेशन स्पेसिफिकली किस चीज के खिलाफ था? इलीगल फार्मास्यूटिकल ड्रग ट्रेड के खिलाफ। सिंडिकेट पेमेंट्स के लिए क्या यूज कर रहा था? क्रिप्टोकरेंसी, कम्युनिकेशन के लिए सिंडिकेट्स ने क्या यूज किया? एनक्रिप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस मॉडल पर बेस्ड था? ड्रॉप शिपिंग मॉडल्स पर। Now pause and practice saying Operation MedMax targets illegal pharma drugs. In short, NCB's Operation MedMax dismantled a highly sophisticated pharma drug cartel using crypto and drop shipping models. Topic name: Operation Crystal Fortress. Broad macro theme: the narco-terror nexus. Busting the meth networks. Joint operation stopping transnational methamphetamine cartels. Breaking Bad की तरह क्रिस्टल मेथ का धंधा पर रियल लाइफ में एनसीबी ने इन्हें धर दबोचा. Intro: NCB and Delhi Police Special Cell arrested peddlers in Delhi, concluding Operation Crystal Fortress. Background: 4-month-long exercise. Transnational racket from Dubai. Core logic: crystal refers to methamphetamine, which has a white crystal-like appearance, also called ice. Huge demand at rave parties. Fortress denotes secured hiding area. Other operations include Delhi police busted international cartel cultivating hydroponic marijuana or ocean-grown weed. DRI launched Operation Weed Out. Operation Samudragupt 2022 by Indian Navy and NCB for Indian Ocean. Operation Narcos 2022 by RPF for trains. UNODC World Drug Report 2025 states 316 million used drugs, cannabis most widely used. UN Day Against Drug Abuse is June 26. Real-world impact is a key operations list. UPSC focus on matching operations with agencies like Weed Out with DRI, Samudragupt with Navy and NCB, Narcos with RPF. Conclusion: from trains to oceans, every agency is running targeted operations to crush the cartels. Drill time. ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस में क्रिस्टल किस ड्रग को बोलते हैं? Methamphetamine यानी आइस को। हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना को और किस नाम से जानते हैं? Ocean grown weed, ऑपरेशन वीड आउट किस एजेंसी ने लॉन्च किया? DRI यानी Directorate of Revenue Intelligence ने। इंडियन नेवी और एनसीबी के जॉइंट ऑपरेशन का क्या नाम था? Operation Samudragupt, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? Operation Narcos. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग समुद्रगुप्त इन ओशन, नार्कोस इन ट्रेन्स. In short, operations like Crystal Fortress, Samudragupt and Narcos show a multi-agency crackdown on global drug syndicates. टॉपिक नेम: इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट 2023. Broad micro theme: modernizing India's armed forces. Jointness among armed forces. Bringing Army, Navy and Air Force under unified commands. सोचो 3 अलग डिपार्टमेंट्स एक ही कंपनी में बिना कम्युनिकेशन काम करें, क्या होगा? ये एक्ट उनको एक बॉस के अंदर लाता है. Intro: the act aims to bolster effective command, control and functioning of ISOs. Background: it promotes jointness among armed forces for quicker decisions. Core logic: empowers commanders-in-chief and officers in command of ISOs to exercise command and control over service personnel for discipline and administration regardless of their parent service. Minimizes need for multiple proceedings. Real-world impact is defense restructuring. UPSC focus: supports transition to integrated theater commands. Conclusion: unity of command is the first rule of modern warfare, and this act delivers it legally. Questions: इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट किस साल पास हुआ? 2023 में इसका मेन पर्पस क्या है फोर्सेस के बीच? जॉइंटनेस प्रमोट करना, ये कमांडर्स को क्या पावर देता है? क्रॉस सर्विस पर्सनल पर डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, इससे कौन सा लंबा प्रोसेस छोटा हो जाएगा? मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का प्रोसेस, ये एक्ट किस मेजर डिफेंस ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है? इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स बनाने को। Now pause and practice saying ISO Act empowers jointness for theater commands. In short, the ISO Act 2023 allows commanders to discipline personnel across all branches,
paving the way for integrated theater commands. Topic name 22nd Shangri-La Dialogue. Broad micro-theme, modernizing India's armed forces. Asia's premier defense summit, the biggest annual meeting of defense experts and ministers in Asia. दुनिया भर की डिफेंस के टॉप बॉसेस एक रूम में मिलकर ग्लोबल सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं. Intro. Chief of Defense Staff, CDS, will visit Singapore to attend this event. Background, hosted by the International Institute for Strategic Studies. Core logic. It is an annual international security conference held in Singapore, known as Asia's premier defense and security summit. Features defense ministers, military chiefs, and strategic experts. Real-world impact is international relations, UPSC focus on location, Singapore, and organizer ISS. Conclusion, the Shangri-La Dialogue is where the blueprint of Asian geopolitics is drawn. Drill time. 22nd Shangri-La Dialogue कहाँ हो रहा है? Singapore में. इस इवेंट को कौन होस्ट करता है? International Institute for Strategic Studies, यानी IISS. इंडिया से इसमें कौन पार्टिसिपेट करने जाएगा? Chief of Defense Staff, यानी CDS. यह समिट कितनी बार होती है? Annual, यानी हर साल होती है. इसे एशिया का क्या माना जाता है? Premier Defense and Security Summit. Now, pause and practice saying, Shangri-La Dialogue is hosted in Singapore by IISS. In short, the Shangri-La Dialogue in Singapore remains Asia's most crucial annual gathering for defense chiefs and strategic experts. Next, topic name, Agniveers. Broad micro theme, modernizing India's armed forces. Career progression for Agniveers. What happens to the young soldiers after their 4-year tour of duty ends? 4 साल आर्मी में सर्व करने के बाद एक जवान को नई जॉब और करियर सपोर्ट कैसे मिलेगा? Intro, first batch of Agniveers set to retire in 2026. Home Ministry assigned to coordinate their career progression. Background, Agnipath scheme launched in 2022. Recruits soldiers, airmen, sailors for 4-year terms. Core Logic, an online portal, will monitor post-service prospects. 75% of Agniveers will exit service. 50% reservation is assured for eligible ex-Agniveers in CAPFs, yani Central Armed Police Forces. First batch eligible for CAPF recruitment, like CISF, BSF, CRPF, in 2026. Age brackets set at 17.5 to 21 years, capped intake of 1.75 lakh till 2026, aims to bring average age of forces from 32 down to 26 years. Real-world impact is military HR overhaul. UPSC focus on 50% reservation in CAPFs, average age reduction target. Conclusion, the Agnipath scheme is fundamentally rewiring the demographic profile of our armed forces. Questions? अग्निवीर्स का पहला बैच किस साल रिटायर होगा? 2026 में. इनकी करियर प्रोग्रेशन कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी? होम मिनिस्ट्री. CAPFs में इनके लिए कितना रिजर्वेशन रखा गया है? 50% रिजर्वेशन. 4 साल बाद कितने % अग्निवीर्स एग्जिट करेंगे? 75% एग्जिट करेंगे. फोर्सेस की एवरेज एज 32 से घटाकर कितनी करनी है? 26 years. Now, pause and practice saying, Agniveers get 50% reservation in CAPFs. In short, as the first batch of Agniveers retires in 2026, the Home Ministry is prepping a portal and 50% CAPF reservation to ensure smooth transitions. Alright दोस्त, क्या माइंड बेंडिंग सेशन था. चलो जल्दी से रिकैप मारते हैं. सिक्योरिंग फ्रंटियर्स में हमने देखा 2025 एक्ट और CIBMS से डेमोग्राफी मिशन, AFSPI की इम्यूनिटी और नॉर्थ ईस्ट का एक्ट ईस्ट विजन. LWE फाइनल पुश में रेड कॉरिडोर अब बस 3 जिलों में सिमट क्या है. बस्तर ओलंपिक्स और अबू जमात के वेलफेयर स्कीम्स नक्सलिज्म का एंड कर रहे हैं. इनविजिबल वॉर ऑनलाइन में DDoS बॉटनेट्स, VPN ट्रैकिंग, BFII वाईफाई सर्वेलेंस और MAC एंड NAT ग्रिड का ग्रैंड इंटेल फ्यूजन. Evolving terror tactics included ricin toxin, बिना एंटीडोट के, TATP explosives और थ्रीमा पर डेड ड्रॉप ईमेल्स. जोकिंग टेरर फंड्स में FATF की न्यू रूल्स, जहां बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है फॉर अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ड्रिवन बाय ED. नार्को टेरर नेक्सस कवर्ड डेथ क्रेसेंट से वेस्टर्न कोस्ट और ट्रायंगल से ईस्टर्न कोस्ट पर अटैक, ड्रोन्स और डार्क वेब का यूज, जिसे NCB ऑपरेशंस क्रश कर रहे हैं. और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में ISO एक्ट 2023 से जॉइंटनेस और अग्निवीर्स का 50% कैपएफ कोटा फॉर अ यंगर शार्पर मिलिट्री. हर डिटेल कवर हो गई, लेकिन थोड़ा सोच लो दोस्त. हम अपने बॉर्डर्स को रेडार्स और फेंसेस से सिक्योर कर रहे हैं, पर आज का सबसे बड़ा इन्फिल्ट्रेटर शायद तुम्हारी पॉकेट में रखा स्मार्टफोन है, जो साइलेंट वाईफाई सिग्नल से तुम्हारा हर मूव ट्रैक कर रहा है. इस इनविजिबल थ्रेट से तुम खुद को कैसे बचाओगे? थिंक अबाउट इट. See you in the next deep dive. Keep learning, stay curious.